हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी माय वे। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यार सब बढ़िया से होंगे और मज़े से होंगे। तो गाइस, जो हमारा टॉपिक था HTML बेसिक, उसी के ऊपर बात चल रही थी, उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज HTML हाइपर लिंक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। द HTML टैग डिफाइंस ए हाइपर लिंक. A hyperlink or link is a word, group of word or image that you can click on to jump to another document. When you move the cursor over a link in a web page, the arrow will turn into a little hand. The most important attribute of the A element is the href attribute, which indicates the link's destination. By default, link will appear as follows in all browsers. An unvisited link is underlined and blue. A visited link is underlined and purple. An active link is underlined and red. So next tag is head. HTML head. जब भी हम HTML head लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? The head tag element is a container for all the head elements. Elements inside head can include scripts, instruct the browser where to find style sheets, provide meta information and more. उसके बाद है the HTML title element. The title tag defines the title of the document. The title element is required in all HTML, XHTML documents. The title element defines a title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorites, displays a title for the page in search engine results. उसके बाद रहने वाला है the HTML style element. The style tag is used to define style information for an HTML document. Inside the style element, you specify how HTML elements should render in a browser. बाकी ये आपको इसकी कोडिंग दिख रही होगी. हेड टैग, स्टाइल टाइप, टेक्स्ट, CSS, बॉडी, कलर, जो भी आपने करना है इसी के अंदर कर सकते हो. और स्टाइल को क्लोज कर देना है और हेड को भी. उसके बाद हमारे पास है HTML स्टाइल CSS. CSS was introduced together with HTML4 to provide a better way to style HTML elements. CSS can be added to HTML in the following ways: inline, using the style attribute in HTML elements; internal, using the style elements in the head section; and external, using an external CSS file. HTML images. In HTML, images are defined with the image img tag. The img tag is empty, which means that it contains attributes only and has no closing tag. To display an image on a page, you need to use the src attribute. src stands for source. बाकी आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, वीडियो को आप पॉज करके अच्छी तरह इसको स्टडी कर लेना. उसके बाद हमारे पास है HTML tables. Tables are defined with the table tag. A table tag is divided into rows with the tr tag, and each row is divided into data cells with line td tag. Td stands for table data and holds the content of a data cell. A TD tag can contain text, links, images, lists, forms, other tables, etc. As you can see in for example table border, ये आप अच्छी तरह स्टडी कर लेना और इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करना. उसके बाद हमारे पास है HTML unordered list. An unordered list starts with the UL tag. Each list atom starts with the li tag. The list atoms are marked with bullets, typically small black circles. UL, li, for example coffee, milk, और इसको क्लोज कर देना. उसके बाद हमारे पास है HTML ordered list. An ordered list starts with the OL tag. Each list atom starts with the li tag.
the list items are marked with numbers. बाकी ये आपको एग्जांपल दी गई है, आप इसको प्रैक्टिकली करें, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। और नीचे रिजल्ट या हाउ HTML कोड्स अब लिंक्स इन ब्राउज़र, कॉफ़ी एंड मिल्क अलग अलग लिस्ट में आ गया पहली दूसरे नंबर पे। उसके बाद हमारे पास है HTML फॉर्म। HTML forms are used to pass data to a server. The form tag is used to create an HTML form. Form tag input elements and form tag close. So next element is HTML forms, the input element, the most important form element in the input element. The input element is used to select user information. An input element can vary in many ways depending on the type, attribute. An input element can be of type text, field, checkbox, password, radio button, submit, etc. And now HTML iframes. An iframes is used to display a web page within a web page. Syntax for adding an iframe: starting tag, iframe, src, URL, and closing tag. The URL points to the location of the separate page.